you, ma'am. Okay. So when should I start, ma'am? Yeah, ma'am. 1 second. You are live, ma'am. You can start, ma'am. Okay, thank you. So good morning, all of you. I am Dr. Aditi Goel, and I'll be taking up your financial accounting. So the first chapter that we are going to start with is accounting concepts and conventions. Since this is the chapter that you have already done in your 11th class, तो हम इसको एक बारी बस ब्रीफ में रिवाइज करेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस होते हैं. Then we'll move on straight away to our final accounts. Right, so let us revise these accounting concepts and conventions. Accounting concepts basically होते क्या है, concepts और conventions होते हैं जो business different business enterprises होते हैं उनको एक common platform दिया जाता है, right, कि वो किस basis पे अपने financial accounts बनाए. Right, if one entity is following accrual concept of accounting, another entity is following cash concept of accounting, तो उनके लिए उनके जो accounting statements है कंपेयर करना दूसरे आउटसाइडर के लिए ऐसे दो डिफरेंट एंटरप्राइजेस के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कंपेयर करना वोंट बी इजी, वोंट बी फीजिबल, इट वोंट गिव एनी मीनिंगफुल रिजल्ट. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट इसलिए दिए जाते हैं बिजनेस हाउसेस को, अकाउंट ऑर्गेनाइजेशंस को, सो दैट दे मेक देयर अकाउंट्स ऑन दी सिमिलर कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स. सो द फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था in our 11th class was business entity concept. Business entity concept में क्या होता है that a business and the proprietor, they are considered as two separate things. They are not similar, they are considered as two separate things. We all know that in the case of sole proprietorship, जो हमारा legal term में बोलते हैं that the businessman and the business, they are not different in case of sole proprietorship जो हम पढ़ते हैं. But when we talk about accounts, these two are different. तो जो बिजनेसमैन के प्रोपराइटर के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, whatever personal expenditure he is doing, we don't record them in the accounting books. So this is what is stated in business entity concept. Business entity is separate and distinct from its owners, and the accountant, the role of the accountant is to prepare financial statements for the business entity and not for the proprietor. अगर proprietor रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा रहा है, अपने लिए कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है, अपनी फैमिली के पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है, so that are not supposed to be recorded in the accounting books. Next, affairs of the owners. Actually, the affairs of the owners are irrelevant to the financial statements. So this is all in business entity concept. Next concept is going concern concept. Going concern के अंदर the life of the business is assumed that the business will continue, will exist for a long period in the future. ऐसा नहीं है हम बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं और ये assumption है कि हम बिजनेस दो साल में बंद कर देंगे. हम इस पर्सपेक्टिव से कभी भी बिजनेस के अकाउंट्स नहीं बनाते. So financial statements, they are prepared on the assumption that entity will continue its operations into a foreseeable future. Long period के अंदर भी वो अपने जो accounts है वो बनाएगी. Right, business will continue to operate and accounts are made keeping that in the mind. Next concept is monetary unit, or we also call it money measurement concept. So money measurement concept सिर्फ हम बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ही इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है. सपोज बिजनेस ने कोई एसेट खरीदा, सो दैट एसेट कैन बी purchased in that can be measured in the monetary unit, right? So we are going to enter that particular asset in our accounts. But बिजनेस ने किसी हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बनाए, सो अपने अच्छे रिलेशंस बनाए, दिस कांट बी मेजर्ड. द रिलेशंस कैसे रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, बुरे रिलेशंस हैं दूसरी बिजनेस एंटरप्राइजेस के साथ, दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट. सो उसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे इन आवर बुक्स. सो मॉनेटरी यूनिट सिर्फ और सिर्फ इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वो ही इवेंट्स हमने रिकॉर्ड करने हैं हमारी बुक्स में जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है. एंड this concept actually it highlights one of the major limitations of the accounting, that is its inability of the accounting to record the factors, qualitative factors. Qualitative factors कौन से हो गए, like the health of the CEO of the company,
जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनकी एम्प्लॉयज की हेल्थ कैसी है, एटीट्यूड ऑफ लेबर, रिलेटिव एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, या फिर जो उसके पास कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में ऑफर करने के लिए. सो दिस कैन नॉट बी, जो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉनेटरी कंसेप्ट वी कैन नॉट नोट डाउन इन आवर अकाउंट्स, राइट. So the fourth concept is of historical cost. So historical cost के अंदर we all know जिस एसेट पे, जिस प्राइस पे एसेट एक्वायर किया जाता है, हमें बुक्स के अंदर वही प्राइस पे, वही उसी प्राइस पे उसको शो करना है. फॉर इंस्टेंस हमने 2010 के अंदर एक एसेट परचेज किया जिसकी बुक वैल्यू थी रुपीज 2 लाख, जिसको हमने 2 लाख में एक्वायर किया. आज उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख. सो हम उसको 10 लाख पे नहीं शो करेंगे. हमने सपोज कोई बिल्डिंग एक्वायर किया, लैंड एक्वायर किया था बुक्स में जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, और आज 10 साल बाद, 12 साल बाद उसकी वैल्यू है 10 लाख. सो वी आर नॉट गोइंग टू शो इट एट 10 लाख. हम बुक्स में उसको आज भी 2 लाख पर ही शो करेंगे. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एट द प्राइस at which it is acquired, and it applies not only in initial recording but also in the cases of subsequent reporting of transactions. जैसा मैंने कहा, हम 10 साल बाद भी उसको उसी प्राइस पे ही रिकॉर्ड करने वाले हैं. We are not going to change the price. However, this does not mean कि हमेशा, for instance, in case of assets like machinery, हम मशीनरी पे we provide the depreciation, पर depreciation provide करने के लिए जो हमारे बेस कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसी के ऊपर चल रहा होता है, राइट. सो हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हम डेप्रिसिएशन को अकाउंट में नहीं लेंगे. बट डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस कॉस्ट है, एक्वायर्ड कॉस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलती आएगी. दिस वाज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. सी आई जस्ट स्टेटेड इन गोइंग कंसर्न कि जब बिजनेस आ रहा है लाइफ के अंदर, तो हमारी यही assumption है कि बिजनेस बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू वाइंड अप इन नियर फ्यूचर. सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का इससे क्या रेलेवेंस है कि अगर हम इन सब चीजों को रिकॉर्ड करते जाएंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू समराइज आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो उसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा. फॉर इंस्टेंस, मैंने बिजनेस शुरू किया 2010 में और 2012 तक 2022 तक मैं बिना कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए, बिना हर साल अपने बैलेंस शीट बनाए, मैं सिर्फ रिकॉर्ड किए जा रही हूँ 2010 से लेकर 22 तक कि मेरी कितनी सेल्स हो रही हैं, मेरी कितनी परचेज हो रही हैं. इसका कोई रेलेवेंस रह जाएगा 2022 के अंदर कि 2010 से लेकर 22 तक टोटल सेल्स इतनी है, टोटल परचेजेस इतनी है? नहीं, राइट. वी नीड टू bifurcate this period of 12 years into certain accounting periods. और accounting period क्या होता है? It is usually of 12 months, जो बनाया गया है to provide us the timely information. 12 साल की इंफॉर्मेशन, आज से 2010 में क्या हुआ था, क्या स्टेटस था, मेरे लिए वो irrelevant है, वो टाइमली नहीं है. 2010 में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो मुझे आज पता चल रहा है, दैट इज नॉट टाइमली इंफॉर्मेशन. सो टाइमली इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है. एंड दैट छोटे पीरियड इज यूजुअली 12 मंथ्स. कि हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा सब रिकॉर्ड करते हैं. वी रिकॉर्ड आवर सेल्स, वी रिकॉर्ड आवर एक्सपेंसेस, वी रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यूज, we record all the accounting activities, all the monetary activities जो भी हम कर रहे हैं in that period of 1 year. और 1 year के end में we close our book to calculate हमने उस एक साल में कितना profit earn किया है. So accounting period का मतलब basically यही है to provide us the timely information. और to provide timely information हमने business की जो entire life है उसको छोटे छोटे bits में divide कर दिया है. That is usually of 1 year, and for most of the countries that is from 1st April to 31st March. Next is a consistency concept. So consistency concept में क्या होता है? So there are different accounting methods. If I talk about depreciation, so we have heard of straight line method and depreciation. We have heard of written down value, exponential method. So और अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज की, इन्वेंट्रीज में भी हमारे पास है LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज, राइट. सो डिफरेंट मेथड्स हैं. सो हम एक साल, अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, हम एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लगा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू. सो दैट इज
of that will create confusion, consistency नहीं है, राइट. सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है कि अगर एक बार किसी एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि उसको एक पर्टिकुलर मेथड लगाना है, राइट, देन इट शुड यूज द सेम मेथड फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स. ऐसा नहीं है वो एक साथ एक मेथड यूज कर रही है, सेकेंड ईयर सेकेंड मेथड. सो इफ any enterprise, any organization has decided that it is going to use straight line method for depreciation, then for the coming years it should use straight line method. So this is inconsistency कि अगर एक method decide कर लिया है use करना है, तो वो same method should be used for the following years, for the subsequent periods. Next is matching concept. Matching concept इसके अंदर to make it easy, matching concept में see when we are doing the business, we incur expenditure and we earn profit, right? So incurring expenditure, I'll use the term कि हम expenditure अगर कर रहे हैं, for instance अगर हम सामान खरीद रहे हैं, raw material खरीद रहे हैं या labor hire कर रहे हैं, so we are making an effort to earn profits. तो profit क्या है? Profit हमारा accomplishment है और उस profit को अर्न करने के लिए, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइंग द रॉ मटेरियल्स, इन द फॉर्म ऑफ पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ पेइंग फॉर द लेबर, राइट. सो उसको हमें मैच करना है एज एन कि जिस पीरियड में हमने जितनी मेहनत, जितना रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितना खर्चा लगा है, दैट शुड बी मैच्ड, राइट. So if you can read, यहाँ पर ये लिखा हुआ है income or profit reported on a financial statement is the net result of matching of relating cost and revenues of a period. मतलब एक पीरियड के अंदर हम जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट या इनकम को या रेवेन्यू को अर्न करने में हमारा कितना खर्चा लग रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, हमने उसको वो एलोकेट करना है to calculate the profit, else profit won't be calculated appropriately. तो अगर हमने 1000 रुपीज का रेवेन्यू अर्न किया है, तो 1000 का रेवेन्यू अर्न करने में हमने कितनी लेबर स्पेंड करी है, कितने हमने रॉ मटेरियल स्पेंड करे हैं, कितने हमने ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर किया है, उसको हमने कैलकुलेट करना है. सो दिस इज मैचिंग कंसेप्ट. जस्ट रिविजिटिंग द स्टेटमेंट कि कितने पर्टिकुलर इनकम अर्न करने में कितने एक्सपेंडिचर लगे हैं, सो वी हैव टू मैच दैट in the matching concept. The next is dual aspect concept. We all know this is the fundamental equation of our accounting. Fundamental equation क्या होती है? Assets is equal to liabilities plus capital. Dual aspect के according हम जो भी transaction करेंगे उसके दो impact होंगे जिसकी वजह से इस equation की equality हमेशा बनी रहेगी. For instance, let me take an example. हमने 1 लाख रुपीस की कार ली ऑन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख. उससे क्या हुआ, मेरा एसेट जो मेरा कार है वो इंक्रीज हो जाता है 1 लाख से, और जो मेरी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है 1 लाख से. मैंने 1 लाख का लोन लिया है. सो दिस इससे क्या है, इक्वेशन हमेशा मेंटेन रहेगी. एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस, ओनर ने अपनी और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में, कैश लेके आया बिजनेस में वर्थ रुपीज 5 लाख. उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा फॉर रुपीज 5 लाख और हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा फॉर रुपीज 5 लाख, जिससे the equality of this equation will always be maintained. So this is in dual aspect. किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होंगे इस बेसिक इक्वेशन में, जिससे इस इक्वेशन की इक्वालिटी हमेशा बनी रहेगी. नेक्स्ट इज एक्रूवल कंसेप्ट. एक्रूवल कंसेप्ट में we all must have done that transactions are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period to which they relate. हमने उसके लिए कैश दिया है, कैश रिसीव किया है, इसका कोई मतलब नहीं है. जिस पीरियड को वो बिलोंग करते हैं, हमने उसी पीरियड में वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है. फॉर इंस्टेंस, मैंने मार्च के मंथ में अपने लिए एडिशनल लेबर हायर करी और मैंने लेबर की जो पेमेंट थी लेकिन करी इन द मंथ ऑफ मे. मुझे वो रिकॉर्ड करना है मार्च के मंथ में. मार्च कम्स इन माय प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, राइट. अगर मैंने
2021 के अंदर लेबर हायर करी है, चाहे मैंने उसकी पेमेंट 2021-22 में करी, राइट, मैंने उसकी जो रिकॉर्डिंग है इन माय बुक उसको प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में ही करना है, जो 2021 था उसी में ही रिकॉर्ड करना है, जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें रिकॉर्ड नहीं करना है मुझे। जिस पीरियड में मैं पे कर रही हूँ उसमें रिकॉर्ड नहीं करना है, जिसमें वो एक्चुअली अक्रू हो रहा है, जिसमें वो फाइनेंस एक्सपेंडिचर एक्चुअली अक्रू हो रहा है या इनकम एक्चुअली अक्रू हो रही है, मुझे उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज द अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें खर्चे या रेवेन्यूज उस पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं जिसमें वो पर्टेन करते हैं, ना कि उसमें जिसके अंदर हमने उनके लिए एक्चुअली कैश दिया या कैश रिसीव किया। इसके बाद आ जाते हैं कन्वेंशंस। अभी तक जो हमने पढ़े ये थे कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या होते हैं? दीज आर कॉमन, दे आर बेसिकली लाइक रूल्स कि सबको यही फॉलो करने हैं, दीज आर रूल्स, राइट। कन्वेंशंस क्या हो जाते हैं? कन्वेंशंस हम अपनी मर्जी से, वी यूज आर डिस्क्रिशन, हमने कौन सा कैसे यूज करना है, वी यूज आर डिस्क्रिशन इन अप्लाइंग द कन्वेंशंस। सो द फर्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब, फुल डिस्क्लोजर मीन्स कि हमने जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है, राइट, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग माय अफेयर्स ऑफ बिजनेस, आई हैव टू कंप्लीटली डिस्क्लोज इट, राइट। सब कुछ बताना है, सब कुछ जो मटेरियल इंटरेस्ट का है ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स कौन होता है? प्रोप्राइटर यूजर है, कस्टमर्स यूजर्स हैं, गवर्नमेंट यूजर है, इन्वेस्टर्स यूजर है, राइट। सो इनकी नीड के लिए, इनके इंटरेस्ट के लिए जो जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ऑल ऑफ दैट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. This is in convention of full disclosure. Next is convention of materiality. कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी मतलब ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये उसका कॉन्ट्ररी है जो हमने अभी पॉइंट किया था फुल डिस्क्लोजर, ये उसकी थोड़ा सा कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी एज इन कि इसके अंदर दिस पॉइंट सेज कि जो जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। कुछ इररेलेवेंट चीज है दैट कैन बी स्किप्ड, लेकिन जो मटेरियल है वही चीजें हमने डिस्क्लोज करनी है जो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हम हर छोटी छोटी बात को रिकॉर्ड करेंगे वो अननेसेसरीली अकाउंटेंट्स का और जो उसके रीडर्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो भी रीडर्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के रीडर्स हैं, उनके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इफ वी आर गोइंग टू शेयर इवन माइन्यूट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। सो अगर कोई चीज इमटेरियल लगती है तो उसको जो मटेरियल चीजें हैं उनके साथ मर्ज कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस कोई छोटे छोटे टूल्स हैं जिनका कोई नीड नहीं है, बिजनेस ने एक्वायर किए, so that could be merged with the major tools, जहां पे जो tools कैटेगरी है उसके साथ merge उसको करके we can show that in the accounting book, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। so this is convention of materiality, कि जो मटेरियल चीजें हैं वो ही रिपोर्ट की जाए, जो बेकार की चीजें हैं that can be skipped to avoid confusion. The last is convention of conservatism और prudence. Prudence का मतलब समझदारी होता है। So इसका मतलब समझदारी से हमने अपना जो रिकॉर्ड्स हैं बनाने हैं कि हमने जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो एंटिसिपेटेड गेन्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना। हम एंटिसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड कैसे करते हैं? फॉर इंस्टेंस हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा ये कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस में आ जाता है कि हम वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो बैड डेट्स हो सकता है, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं प्रोविजन बना के, राइट। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में यही है कि अगर हम कुछ लॉस एंटिसिपेट कर रहे हैं वी शुड रिकॉर्ड इट, लेकिन अगर कोई हम गेन एंटिसिपेट कर रहे हैं वी कैन चूज टू स्किप इट, हमें वो रिकॉर्ड नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल इन अकाउंटिंग concepts and conventions. Now I'll be starting with, yes, yeah, now I'll be starting with final accounts. Final accounts के अंदर we are supposed to make 3 accounts. Final accounts में हमें 3 accounts बनाने हैं। पहला हमें बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड अकाउंट हम बनाते हैं दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो थर्ड अकाउंट बनाते हैं वो हमारा होता है बैलेंस शीट, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आई एम शोइंग यू द प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑन माई स्क्रीन। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
we record, first thing that we record is our opening stock, और opening stock के बाद we record our purchases, right? Purchases, net purchases, purchase less purchase returns, and then here we record all our direct expenses. ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में हम खर्चा कर रहे हैं, राइट? हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के अंदर जो जो खर्चा हो रहा है, खर्चा कैसे हो रहा है? हम वी आर पेइंग वेजेस टू द लेबर, वी आर ब्रिंगिंग इन आवर रॉ मटेरियल्स, राइट? सो वी आर पेइंग द कार्टेज on that transportation for bringing our raw materials. We are paying for the labor, so that's covered in the wages, right? We are paying for the raw materials. So these are our direct expenses जो हम product produce करने में बना रहे हैं. So that's my direct expense. On the credit side, we show our sales, less sales returns and closing stock. Closing stock में हम जो question करेंगे उसके अंदर ये closing stock कब आएगा ट्रेडिंग में, कब नहीं आएगा, that I'm going to explain. इनके बाद जो बैलेंस बचता है, इन आइटम्स को रिकॉर्ड करने के बाद जो बैलेंस बचता है, that will be our gross profit or gross loss. If we have a credit balance means that the credit side is more than the debit side. That will mean we have a gross profit. And if we have a debit balance means that debit side is more than the credit side, then that will be our gross loss. So ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं आगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो यू कैन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हियर, राइट? सो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी शो ऑल आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हम पहले यहाँ पर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो हमने ट्रेडिंग में कैलकुलेट किया उसको ट्रांसफर करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट है तो ऑन द क्रेडिट साइड, ग्रॉस लॉस है ऑन डेबिट साइड. Then we record all our indirect expenses. Indirect expenses मतलब जो ऑफिस में एक्सपेंस हो रहे हैं, ऑफिस रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, स्टेशनरी हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, या फिर जो सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एज एन वी आर डूइंग सम मार्केटिंग एक्सपेंस, वी आर गिविंग डिस्काउंट्स टू आवर कस्टमर्स, we are paying for some commission to our salesmen, right? Depreciation. So all these are recorded on the debit side of profit and loss account. और अगर कोई हमारी इनकम हो रही है, that is recorded on the credit side of the profit and loss account. We are not talking about income from sales here. Sales हमारी record होती है in our trading. So talking about miscellaneous income, for instance हमें discount मिल गया customer हमारे creditors से, so that we will share here. हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, हमें डिविडेंड मिल रहा है उस पे, so we are going to record that dividend. If we are receiving a commission, that we are going to record on the credit side. So जो भी हमारी इनकम हो रही है miscellaneous sources से, we write that on the credit side of profit and loss. और जो भी हमारे indirect expenses हो रहे हैं, we write that on the debit side of profit and loss account. So this was in profit and loss account. यहाँ पर हमारा आता है net profit या net loss. Balancing figure in our profit and loss account is our net profit और net loss. Right? इसको हम ट्रांसफर करते हैं हमारा बैलेंस शीट में. ग्रॉस जो ट्रेडिंग से हमने ट्रांसफर किया, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में. So this is the pro forma of a balance sheet. राइट. कैपिटल, हम लाइबिलिटीज, दो साइड्स होती हैं, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इन बैलेंस शीट. लेफ्ट हैंड साइड पे हम लाइबिलिटीज लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हम वी राइट एसेट्स. सो कैपिटल आता है लाइबिलिटीज के अंदर, और जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस इनकर किया है, लॉस, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है एड नेट प्रॉफिट. सो दिस नेट प्रॉफिट इज फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर लॉस हुआ है सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, लेस नेट लॉस हो जाएगा. सो कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट, और अगर कोई ड्रॉइंग्स या फिर इनकम टैक्स पे किया है ऑफ सोल प्रोप्राइटर, दैट वी डिडक्ट. एंड वी रिकॉर्ड ऑल द अदर करंट लाइबिलिटीज. That could be our creditors, outstanding expenses, we record that. Transfer to general reserve भी हम यहीं पे करते हैं on our liability side. And on the asset side, we record all our current assets and fixed assets.
Right. So let us do a practice question on this final accounts. So on my screen, you can see the question that we'll be doing in today's class. So if you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this question. Yes, now you can take the screenshot of this question. Take a moment to read this question. Just take a minute to read this question, then we are going to solve it in today's class. I hope all of you have taken this question. So let us solve this question now. So for the ease, I have just plotted the trial balance items given in the trial balance in these three accounts. I'm going to discuss it one by one. The first thing that is given to us is capital account, right? So capital हम record करते हैं balance sheet में liability side पे. मैंने यहाँ पर मैं इसको highlight करती जाती हूँ कि ये items हम cover कर रहे हैं. कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे बैलेंस शीट में. मैंने वो यहाँ पर लिख दिया बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे माय कैपिटल इज 1,01,500. राइट. नेक्स्ट आइटम गिवन टू अस इन द क्वेश्चन इज कैश इन हैंड. राइट. तो कैश इन हैंड हमारा एसेट है. We write it on our asset side in the balance sheet, which I have written here, asset, cash in hand 6470. Next given is cash in bank, and the amount of cash in bank is 17,190. So here I show you it is cash in bank. Again we record cash in our assets. Cash in bank भी हमारा asset है. Balance sheet में हम record करते हैं हमारा cash in bank. That's 17,190. Next item in trial balance is of opening stock. Opening stock हम हमेशा trading में record करते हैं on the debit side. So this is my opening stock in trading account on the debit side. Next item given to us is furniture account. Furniture हमारा asset है, right? So furniture asset है. We record it in our balance sheet on the asset side. So here is our furniture 6600 on our asset side. Next given to us is sundry debtors. Sundry debtors में हमें तीन accounts given है of Musica, Manohar Electronics and V Traders. So here I have recorded my debtors. Debtors मेरे So debtors are my assets, जिसको मैंने balance sheet में asset side पर लिखा है. Next after debtors given to us is bills payable account. Bills payable मतलब we are supposed to pay it. हमें कुछ payment करनी है, उसके लिए हमने bills दे रखे हैं. So that is my liability. That is the liability of the business. So we are going to record it on the liability side. Bills payable हमने liabilities में record कर दिया. Next thing is advertising account. Advertising account क्या है? Advertising account is nothing but the advertising expenditure. Advertising expenditure हमारे selling and distribution expenditure का part है, which is our indirect expense. So being indirect expense, we record it in our profit and loss account. So here I am showing my profit and loss account indirect expenditure of advertising 500 rupees. Next is given to us trade expenses. ट्रेड एक्सपेंसेस को कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है बच्चों को, उसको ट्रेड अकाउंट में डाल देते हैं. बट ट्रेड एक्सपेंसेस आर नथिंग बट एक्सपेंसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स, राइट. सो ये जो ट्रेड में लेने देने का जो खर्चा है उसको हम वी टर्म इट एज ट्रेड एक्सपेंसेस. सो दे आर ऑल्सो आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं. सो वी राइट इट इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आफ्टर ट्रेड एक्सपेंसेस वी हैव सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट. अब यहाँ पर सैलरीज पहले लिखा है. सैलरीज एंड वेजेस में हमेशा नोट करना
कि सैलरीज लिखा है पहले या वेजेस पहले लिखा है। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा तो हम उसको वेजेस ट्रीट करके ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, लेकिन अगर सैलरीज और वेजेस है तो हम उसको सैलरीज ही ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। सो दैट विल बी आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इफ इट इज सैलरीज एंड वेजेस, और अगर वेजेस एंड सैलरीज है तो वो आएगा ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज आफ्टर सैलरीज एंड वेजेस ऑफिस स्टोर्स अकाउंट। ऑफिस स्टोर्स अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ऑफिस में हम जो स्टेशनरी पे बेसिकली खर्चा कर रहे हैं, कुछ सामान के लिए खर्चा कर रहे हैं ऑफिस में, सो वी टर्म इट एज ऑफिस स्टोर्स। सो वी आर गोइंग टू राइट इट इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा ऑफिस स्टोर्स विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। मैंने इसको इनर कॉलम पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है हमारे पास at the end of trial balance, so I have written it in the inner column. Next is after office stores we have traveling charges. So traveling charges क्या होते हैं? Traveling charges indirect expenditure है, it is not the direct expenditure. So traveling expense traveling charges भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करेंगे 50. आफ्टर ट्रैवलिंग चार्जेस वी हैव टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने टेलीफोन चार्ज को भी शो किया है in our profit and loss account. After telephone we have rent which is again our indirect expenditure, इसलिए रेंट को भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया है। एंड आफ्टर रेंट वी हैव स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट भी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सो स्टेशनरी को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे। स्टेशनरी इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आफ्टर स्टेशनरी गिवन टू अस इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ये भी फर्म के लिए खर्चा है और इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर डिस्काउंट अलाउड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब ये फर्म के लिए गेन है। जब हम कस्टमर्स को दे रहे हैं डिस्काउंट तो वो खर्चा है, लेकिन अगर हमारे क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हमारे लिए गेन है, हमें कम पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, बिकॉज दैट इज आवर इनकम, दैट्स अ काइंड ऑफ गेन फॉर अस। सो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट वी हैव बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स जो है फर्म के लिए दैट इज लॉस, राइट? फर्म को पैसा मिलना था, नहीं मिल रहा, so that is loss for the firm. So we are going to record it on the debit side of profit and loss account, bad debts account, right? 3000 क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस है, so we are recording it in on the debit side of our profit and loss. So after bad debts given to us is trade creditors. Trade creditors क्या हो गए? मतलब हमें उनको पैसा देना है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना है। सो लायबिलिटी है फर्म के लिए, हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। टोनी लिमिटेड गिवन है 16,000, रिदम कॉर्नर गिवन है 28,000 एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स 4,000, जिसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट गिवन टू अस इज सेल्स 38,900। सेल्स हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग में ऑन द क्रेडिट साइड। हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स 38,900, क्योंकि हमारे पास आगे क्वेश्चन में रिटर्न गिवन है, इसलिए आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड, इन द इनर कॉलम। सेल्स विल ऑलवेज कम ऑन द क्रेडिट साइड ओनली। नेक्स्ट इज डिलाइट सेफ कंपनी। अब डिलाइट सेफ कंपनी, हमें सिर्फ इसका नाम देखने से नहीं पता चल रहा डिलाइट सेफ कंपनी क्या है, राइट? But हमें दिख रहा है कि that is a personal account, right? That we could be owing to this person or this person could be owing to us by just seeing this name. पर हम आगे देखें, so Delight Safe Company का credit balance given है 1600, so which means that we are supposed to pay. ये हमारा creditor है। अगर इसके आगे ये debit balance given होता, that means ये हमारा debtor है। पर इस Delight Safe Company के आगे credit balance है, which means we are supposed to pay. Delight Safe Company is a creditor. So keep this in mind. अगर कोई सिर्फ नेम हो अकाउंट का, right, that shows as a personal account. So that means या तो वो क्रेडिटर हो सकता है या वो डेटर हो सकता है, और वो क्रेडिटर है या डेटर है, हमें उसका जो अमाउंट है कौन से कॉलम में गिवन है, डेबिट कॉलम में गिवन है, क्रेडिट कॉलम में,
में गिवन है, ये देख के पता चल जाएगा. So in our question it was given on the credit side, so that means the LightSafe company is our creditor, the company owes the LightSafe company. So writing it in my trade creditors. Next is purchases account. Purchase account is purchases always shown in a trading account on the debit side. So here I have shown purchases on the debit side. Next given to me is sales return. Sales return को हम sales में से ही less कर देंगे. Sales में से मैंने sales return less कर दिया है 2000 और उसको यहाँ पे show कर दिया है. Next given to me is purchase return. Purchase return मैंने purchase में से less करके show कर दिया है. Next given is post dated check का debit balance. Post dated check का debit balance मतलब ये मेरे लिए फर्म के लिए post dated check asset है, right? अगर इसका credit balance होता तो means वो मेरे लिए liability है. इसका debit balance है means the firm is supposed to receive. Post dated check का मतलब क्या हुआ? आज date है मेरे, आज today is 6th of January 2022. मुझे किसी ने check दे दिया of 20th January 2022. So what it means? It means post dated check. क्या मैं उस चेक को आज जाकर एनकैश करा सकती हूँ? आज मैं उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ? No, I cannot do that. So but that is an asset. वो जो चेक मेरे पास लाई कर रहा है मेरा asset है. In the coming days, I can give it to my bank and get the amount. So but right now I can't. So I will not increase it in my bank balance. What I'm going to do, I'm just going to write that post dated check as an asset in my asset account. So here is post dated check as my asset. Yeah. Okay. The next after post dated check is my drawings account. Drawings हम क्या करते हैं? हम capital में से less करते हैं drawings को. So here मैंने capital में से जो मेरी drawings थी उनको subtract कर दिया 2500 और मैंने ये करके लिख दिया. Right? So this अभी जो मैंने यहाँ पर करा है, मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांजैक्शंस थे उनको मैंने रिकॉर्ड किया है. Now let us move to our adjustments. There are around 10 kinds of different adjustments that we are going to cover in our classes. जिसमें से 3-4 I'll explain you today. So first adjustment जो हमारे पास given है, right? So that is of stock in hand at the end. If you see this question again, I'll show the question again to you. Here you can see adjustment given है ये वाली stock in hand. जहाँ पर मेरा cursor है, you can see that point. Stock in hand at end. Goods rupees 1 lakh. हमारे पास end में goods का stock है 1 lakh. इसका मतलब क्या हुआ? This is my closing stock, right? So closing stock. One thing that you can write in your notes for closing stock is that if closing stock appears in trial balance. Like अभी हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है. जब भी एडजस्टमेंट में कोई चीज गिवन होगी उसकी हमेशा 2 जगह रिकॉर्डिंग होगी. रिपीटिंग, जब भी एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन हो, एडजस्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग हमेशा 2 जगह होगी और जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा एक जगह होगी. तो अगर हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, you can note it down if you want. If our closing balance is given in trial balance, it will be recorded only on the asset side in balance sheet. I repeat, if closing stock is given in trial balance, it will be recorded only on the asset side of balance sheet. But if closing stock is given in the adjustment, it will be recorded on the credit side of trading account. If closing stock is given in the adjustment, it will be recorded on the credit side of trading account as well as on the asset side of balance sheet. So हमें ये ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है
इन द एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में भी. रिकॉर्डिंग हेयर closing stock. Amount of closing stock is 1 lakh. And also I have to record it in my trading account. So I record it here. Closing stock 1 lakh. Okay. The next given to me is stock in hand of office stores 500. So office stores I told you nothing like stationery like items only. So हमारे पास 500 का ऑफिस स्टोर भी है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस में. हम यहाँ पे देखें ऑफिस स्टोर का हमने खर्चा किया साल में 1200 का, जिसमें से 500 बच गए. इसका मतलब क्या है, हमने 500 की स्टेशनरी खरीदी, 500 के 1200 के ऑफिस स्टोर्स खरीदे, और 1200 के ऑफिस स्टोर्स में से 500 आर स्टिल लाइंग अनयूज्ड. 500 स्टिल लाइंग अनयूज्ड मतलब हमने 1200 का पूरा खर्चा नहीं किया, राइट. सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट this less closing balance of my just write stock unconsumed. मैंने कंज्यूम नहीं किया, वो था वर्थ 500. मैंने इस साल कितने का खर्चा किया ऑफिस स्टोर पे, इसका मतलब इस साल मेरा जो खर्चा हुआ है ऑफिस स्टोर पे वो 1200 का नहीं हुआ, वो सिर्फ 700 का हुआ है, करेक्ट. 500 मैंने कंज्यूम ही नहीं किया, तो 700 का खर्चा हुआ है ऑफिस स्टोर का, 1200 का नहीं है. तो ये जो 500 रिमेनिंग है, आई एम गोइंग टू शो इट ऑन माई एसेट साइड बिकॉज आई कैन यूज देम नेक्स्ट ईयर. ऑफिस स्टोर्स $500, right? So this is how I do my question. Office stores ko assets pe likhe my question is complete. What we will do, we will now calculate the balances. Let us calculate the balances here. Net purchases hamari aa jayengi of 91,940 minus 3,200. We get net purchases of 88,740. And we have net sales of 38,900 minus 2,000, that is of 36,900, right. This is my net sales. So I'll now calculate my gross profit or my gross loss. So let me calculate. The total here will be 36,900 plus 1 lakh. That gives me 136,900, and we are going to subtract the items, this item of opening stock as well as of purchases. So minus 40,000 and minus 88,740. So that gives me a gross profit of 8,160. I get a gross profit of 8,160, which I will transfer to my profit and loss account. So I write here profit and loss account. And I'll write my gross profit in brackets. That's just for your convenience. We just write profit and loss account because we are transferring this item to profit and loss account. और यहाँ पर मेरे पास profit and loss account में I'll write trading account. In brackets you can write profit and profit, which is of 8,160. So total here in my profit and loss account is 8,160 plus 320, which is 8,480. And I'll subtract all these indirect expenditure. Let me subtract all these indirect expenses. The first is
500. Next amount is 100. Next is 2000. Then I have 700, 50, 250, 1500, 150, 170, and 3000. So I get my net profit of rupees 60. Right. Since this is my profit, I am going to add to my capital. ये profit हम transfer करेंगे हमारी balance sheet में, capital account के अंदर. So I will add net profit here, which is 60. Let me write down the amounts here on the outer column. So capital का total है मेरा 101,500. Less drawings and adding the net profit of 60. The total of my capital is 99060. Yeah. The total of my creditors here is 16,000 plus 28,000 plus 4,000 plus 1,600, which gives me 49,600. Now I'll add up all the items on my liability side. That's 49,600 plus 13,000 plus 99,060. It gives me a total in my balance sheet of 161,660. Right. So I am going to do the same on the asset side. The balance on the asset side is 6470 plus 17190 plus 18,500 plus 4,000 plus 3,400 plus 5,000 plus 1 lakh plus 500. So I get the same balance here. 161,660. Yeah, one thing. Yes. So I hope this question is clear to all of you. If you have doubts, you can raise it right now. You can put them in the question answer box. So here it says you could only see the first slide of accounting concepts and conventions. I hope the glitch didn't happen and the slides, all the slides were visible to you. If anybody could write in the chat box. So I presented my screen. I showed the final accounts. Was the question visible to all of you? Were you able to see the question and the solution?
Oh, okay. If this glitch has happened, I'll share the note with you. I'll share the question that I did in the class, and I'll share the solution with you. I shared my screen the entire time. I don't know what glitch happened. See, I'll try showing my screen to you again. See, if my screen is visible, you can take the screenshots. Can somebody please write in the chat box that if this current question is visible to all of you? Can you please write it in the chat box as yes or no if this question is visible to you? Okay, if the question is visible to you, you please take a screenshot of this question that I did in today's class. This is the question. Please take the screenshot of it. And this is the solution that we did in today's class, which somehow wasn't visible to you. So this is the question that I did. The solution जो हमने solve किया था अभी class के अंदर मैंने. So this is that question, solution. You can take the screenshot of this solution as well. So did you take the screenshot of the solution as well, class? I'll zoom the question. There's a request for zooming the question. I will zoom the question. Right, take the screenshot and then I'll scroll down. Take the screenshot of this page. And this is the later part of the question. I hope now you have taken the screenshots. Yes, we are going to revise the same final accounts in the next class as well. So I hope things will be better in next class. There will be less confusion for you in next class.
right? So since there is no question, see, for the links you need to contact the administration. I cannot give you the link. Yeah, okay, class. So I'll leave today's class. We are going to meet in the next class on Saturday. So if you have question, you can post in the beginning so that I can, अगर मेरी screen visible है नहीं है, post in the beginning for first 5 minutes. I'll see your question and answers. I'll see the chats कि जो class है वो visible है या नहीं है. नहीं visible होगी, then we'll make some arrangements beforehand only. Then I'll start it. Right? So I take leave. Let's meet on Saturday. Bye everyone.